इन सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करिएगा कि एक सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करिएगा कि क्वांटम क्या बला का नाम है। Mr. 𝐒𝐭𝐚𝐫 and 𝐦𝐻𝐢 Gupta, who will be joining us on the stage, and they are from Quantel Private Limited. Round of applause for this duo who are joining us on the stage. Delhi. Come on, everybody, make some noise in the house. We've got this entrepreneurial duo on the stage. Mr. 𝐒𝐭𝐚𝐫 and Mr. 𝐦𝐻𝐢 Gupta, you've got 5 minutes to make your pitch. Your time starts now, and all the best. So, Vanakkam Delhi. I'm 𝐒𝐭𝐚𝐫 and he's 𝐻𝐢 Gupta all the way from Chennai. पहली बात है कैसे रह रहे हो आप लोग? मेरा तो गला ही बैठ गया है यहाँ पे, दिल्ली बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई मेरे को थोड़ी. So yeah, moving on. Our product's name is 𝐭𝐚𝐫 and we are from Quantel Private Limited. So before we move on, I would like to let you all know that we are a part of Tamil Nadu government. So 𝐼𝐡 Foundation, we have an incubation center there, which is supported by METI, Ministry of Electronics and Information Technology. So सर एक नटशेल में बताऊँ अगर अपना प्रोडक्ट, तो जो आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो, दैट कैन बी हैक्ड. अभी कोई बंदा कितना भी आके बोले कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम दिस दैट, अगर क्वांटम कंप्यूटर कम्स इनटू प्ले, दैट कैन बी ब्रोकन डाउन. एनीथिंग RSA ECC कुछ भी, अगर व्हाट्सएप आज है, क्वांटम कंप्यूटर आ गया तो व्हाट्सएप तोड़ा जा सकता है. सो वी हैव बिल्ड समथिंग जो कि क्वांटम कंप्यूटर आने के बाद भी नहीं टूटेगा. सो लेट्स मूव ऑन. सो अबाउट दिस, सो एक एक करके मैं बता दूँ. वी वर ऑल्सो मीटिंग विद द जर्मन ऑनवॉय of North Rhine-Westphalia karke एक state in Germany, so we met with them, and here is one of our ISRO scientists over here, and this is the Tamil Nadu's IT minister. We signed an MOU with them for the incubation program. And एक छोटा सा glimpse about me, I'm a startup trainer as well. I have trained hundreds and thousands of students entrepreneurship में 0 to 1 लेके जाता हूँ मैं startups को. So quantum computing will break this encryption. As I said, जब quantum computer play में आ जाएगा तो कोई भी algorithm होगा, it will break it down. XYZ कुछ भी होगा, क्वांटम कंप्यूटर आ गया तो आपका डेटा सेफ नहीं है. सो द मेन थिंग इज थर्ड पॉइंट, हार्वेस्ट नाउ एंड डिक्रिप्ट लेटर. सो डेटा आपका भी है तो वो हार्वेस्ट करके रख लेगा. व्हेन क्वांटम कंप्यूटर कम्स इनटू प्ले, उसको वो तोड़ देगा एंड योर डेटा विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. आज नहीं तो 5 साल में जरूर होगा ये. सो द पोस्ट क्वांटम ट्रांजिशन इज ऑलरेडी बिगन. NIST US का एक इंस्टीट्यूट है, सो दे हैव मैंडेटेड सम पोस्ट क्वांटम एल्गोरिथम्स. सारी गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर ट्राइंग टू स्टैंडर्डाइज PQC, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी. सो माई गोल इज सर, पैसा अलग चीज़ है, पैसे से कंपनी चलती है. आई वॉन्ट माई कंट्री टू लीड द PQC थिंग, क्योंकि सर क्वांटम जो है, आई कम फ्रॉम चेन्नई, सत्यभामा इंस्टीट्यूट. सो वहाँ पे वेन एवर वी से क्वांटम, जैसे अभी तो पेपर पे है, अभी तो आएगा नहीं सर, कभी तो आएगा. सो हम क्या चाहते हैं कि आग लगने पे कुआं ना खोदें, बल्कि कुआं पहले खोद के रखें, आग लगे तो पानी उठाओ डाल दो. दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग. अ $multi-billion क्रिप्टोग्राफिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सर कुछ भी अगर आप टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट करते हो तो यू रिक्वायर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. सो वो आपका टैम में आ जाता है, वो मार्केट बन जाता है. सो विद इन दैट बिलियंस ऑफ डॉलर्स वी आर टारगेटिंग अ स्मॉल अमाउंट, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे से स्टार्ट करेंगे. एक गली से फिर एक सिटी जाएगा, फिर टाउन जाएगा, फिर सिटी जाएगा, फिर इंडिया आएंगे. सो दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग. सो गवर्नमेंट ड्रिवन कंप्लायंस मैंडेट्स, इंडिया का भी क्वांटम पॉलिसी निकली है. सो द गवर्नमेंट हैज सेड most PQC implementations are bolt on, not infrastructure designs. सर PQC कुछ भी चलता है. आपने पैच वर्क का नाम सुना होगा. एक फॉल सीलिंग है, कुकड़ी, एक नया पीस लगाया और उसको सीमेंट मार दिया. व्हाट वी आर डूइंग, हम पूरी चीज़ निकालेंगे और ऊपर से नया बनाएंगे, बट ग्रेजुअली, क्योंकि कॉस्ट बहुत लगता है. सो एक पार्ट पहले निकालेंगे सीलिंग का, फिर लगाएंगे, फिर निकालेंगे. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. एंड 𝐭𝐚𝐫 इज अ क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी आर्किटेक्चर फॉर एंटरप्राइज. एंटरप्राइज लेवल पर काम करेंगे सर, B2B पे काम करेंगे. B2C में क्वांटम आने में बहुत टाइम है, तब तक शायद मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा पता नहीं. आई लिव एंड डाई ऑफ ओल्ड एज. सो टॉप लेयर में रहेगा आपका SaaS ऑर्गेनाइजेशन लेयर रहेगा, पॉलिसी एनफोर्समेंट ऑब्जर्वेबिलिटी, एंड बॉटम लेयर में यू विल हैव C++ क्रिप्टोग्राफिक इंजन. ये टेक्निकल स्टफ सर, इफ एनीबडी इज टेक्निकल हियर वी कैन हैव 1-to-1 आफ्टर यू, इफ यू लाइक माय आइडिया. सो इट विल बी अ 2-layer थिंग, आवर प्रोडक्ट. Enterprise grade quantum safe infrastructure. So these are the details. We have quantum safe encryption, we have quantum safe signatures, hybrid migration support. Sir, transition करने पे पहले classical लगेगा, then we need PQC, because completely if you go to PQC, लोग overwhelm में हो जाएंगे कि इतना खर्चा क्या बता रहे हो आप.
So we'll have some classical algorithms, then we'll transition slowly into quantum algorithms. And the last one, full observability. The main problem with today's PQC thing, लोग observe नहीं करते, बस लगा देते हैं, फिर pilot में ही फट जाती है, फिर they transition back to the classical thing. Now what we are going to observe करेंगे सर, metrics रखेंगे, logs रखेंगे, you will get total report, and compliance telemetry आपको live मिलती रहेगी. What are the things happening? जो build logs बोलते हैं, line by line टक करके आता रहेगा, you will get that. Built on NIST standardized post quantum cryptography. So ये technical information है, if anybody wants they can take a note. And ये सब जो है standardized PQC things है cryptography का. Cryptography without hidden randomness. Sir, cryptography में एक चीज़ होती है, when you create lattice structure, Rubik's cube हो गया, अब अपन का तो 3x3 होता है, 3x3x3. Imagine 131x131. उसमें अगर आपका डेटा कहीं पड़ा है वो मिलेगा ही नहीं, randomness. So we have something which जो आपका रैंडम नहीं है, हमें पता रहेगा डेटा कहाँ है, हम भी नहीं निकाल सकते बट पता रहेगा कि डेटा कहाँ है. सो दैट रैंडमनेस वोंट बी अ थिंग इन आवर थिंग. सो ट्रांजिशन ऐसे होगा सर, अभी आपका क्लासिकल RSA ECC है, देन यू क्लासिकल प्लस PQC. आज के 10 साल बाद टोटली ये MLKM और MLDS आ जाएगा. दैट विल बी टोटली PQC, नॉट क्लासिकल प्लस PQC. तो सर समथिंग इज बेटर देन नथिंग. सो टोटली अगर PQC अभी नहीं है तो क्लासिकल प्लस PQC रख लेते हैं. सो बिफोर गोइंग टू टोटली PQC, क्रिप्टोग्राफी शुड नॉट बी अ ब्लैक बॉक्स. सर क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम थिंग इतना नीश है कि लोगों को लगता है अरे बहुत कुछ होगा. रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस के बराबर ये रॉकेट साइंस नहीं है. इट इज पॉसिबल, वी आर डूइंग इट, सो इट इज पॉसिबल. आई जस्ट रैप इट अप. सो फर्स्ट लेयर में वील हैव अ क्लाइंट, सेकंड लेयर में API गेटवे, ऑल द टेक्निकल स्टफ. एंड ये आपके बिजनेस मॉडल है. वील हैव API प्राइसिंग, एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शंस एंड डेडिकेटेड सिक्योर डिप्लॉयमेंट्स होगा. लास्ट वन हार्डवेयर में वील हैव ओन चिप ऑफ आर्स. आज के 10 साल में तो आ ही जाएगा, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग इन द सिलिकॉन मार्केट. उसके बाद फिर सिलिकॉन चिप, हमारे एल्गोरिथम चिप में डाल के दे देंगे आपको, जो भी IoT डिवाइस में लगाना है आप लगा लो, चला लो, डेटा बच जाएगा, डेटा को कुछ नहीं होगा. वेयर PQC बिकम्स अर्जेंट, ट्रांजैक्शन हो गया सर, हर जगह PQC लगेगा सर. आज आप अपने किसी PA को बोलोगे एक मीटिंग में रीशेड्यूल करो, वो थर्ड बंदा पढ़ लेगा आज के 10 साल बाद. एंड पेशेंट डेटा प्रोटेक्शन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़रूरत है सर. चाइना लगातार साइबर अटैक किए जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम आएंगे अगर प्ले में तो वी कैन डू इट. द लार्जेस्ट क्रिप्टोग्राफिक माइग्रेशन इन डिकेड्स. सो $200 बिलियन का पूरा मार्केट है सर. एंड मिलियंस ऑफ सर, क्योंकि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का भाई मार्केट डिफाइंड नहीं है. सो वी टेकन द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस वी आर गोइंग टू टारगेट. फुल स्केल पे 5,000 से 10,000 बॉडी टारगेट करेंगे इंडिया में, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे. एंड पोस्ट क्वांटम नेटिव सर, ये जो भी करंट एल्गोरिथम्स है ये यहाँ है, हमने अपना क्वांटम चाहो यहाँ पे रखा है. पोस्ट क्वांटम प्लस ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर करंटली. ये हमारा टाइमलाइन है सर. 2023 द ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड. नाउ वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. 2025 में करंटली वी आर इंक्यूबेटेड एट तमिलनाडु टेक्नोलॉजी हब. वी आर सीकिंग फॉर मेंटरशिप एंड पायलट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि एल्गोरिथम बन के रखा है, उसको कहीं रैपर में लगाना है. एंड देन विल कमर्शियलाइज इट बाय mid-27. पूरा मतलब पैसा ढंग से आने लगेगा 2027. सो ये हमारी टीम है सर. ये मैं हूँ उत्कर्ष सिंह, CMO. दिस माई टीममेट CTO यशराज गुप्ता. एंड वी हैव 2 more people. डॉक्टर वेदनारायण इज अ प्रोफेसर एंड इट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड, सो हम उसके लिए काम करते हैं. एंड ही इज द स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर फॉर दिस. एंड पोस्ट क्वांटम नेटिव बट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट. सो दिस इज आवर गोल. So design for tomorrow's threats, built for today's enterprises. So this was my pitch. Thank you, sir. So it's nice to see, a company coming from the quantum bandwagon over here in this particular forum. Kudos to the team, kudos to organizers, and thank you so very much for coming in over here. Well, I should say, not only India needs it, the world needs it. There's a lot of development actually happening in this particular industry. And in times to come, everything is going to be ruled out by quantum. Can you just explain in simple words to the entire forum over here, what exactly is quantum? Not for me, but I would like So, people to understand. जो आज का क्लासिकल कंप्यूटर है, I'll be slightly technical because बिना टेक के क्वांटम नहीं समझ इन सकते. सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करिएगा कि एक सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करिएगा कि क्वांटम क्या बला का नाम है. रैट इन अ मेज आपने सुना होगा कि एक मेज है, उसमें एक चीज रख दो, चूहा छोड़ दो. सो द क्लासिकल कंप्यूटर क्या करते हैं, एक एक बात में एक एक बार चूहा छोड़ेगा. एक चूहा छोड़ेगा, वो चीज पकड़ेगा, दूसरा चूहा दूसरा चीज पकड़ेगा, 1 by 1.
क्वांटम क्या करता है, सारे पाथ में एक साथ चूहे छोड़ता है. सो आप अगर क्लासिकल कंप्यूटर 1 साल लेता है तो क्वांटम कंप्यूटर सेकंड्स में सॉल्व कर देता है. हम एटॉमिक लेवल पे खेलते हैं. सो क्लासिकल कंप्यूटर 0 और 1, क्वांटम इज एनीथिंग बिटवीन 0 and 1. ये चीज़ है. अच्छा, दूसरा एक और चीज़ बताइए, स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा? स्पीड में एक्सपोनेंशियल फर्क पड़ेगा सर. 1 year वर्सेस सेकंड्स. सो क्लासिकल में इट इज 1 year एंड क्वांटम में इट इज लाइक 3 to 4 seconds at max. Good. I have been part of 2 companies in the quantum space. So hence, I just wanted you to be able to tell the entire audience, what exactly is the difference between, what exactly do we mean by quantum? That was the first thing. Yeah, good. So, are you working on any of the use cases over here? Yes sir. Actually every use case is possible with our algorithm. कहीं भी अगर डेटा A से B जा रहा है या फिर स्टोर भी, डेटा लॉकर बेसिकली स्टोर भी हो रहा है तो वहाँ पे भी हमारा जो एल्गोरिथम है लग जाएगा. पूरी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट सिर्फ एक बड़े अभियान से जूझ रही है इस वक्त, एंड दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर. वी से दैट इंडिया हैज़ द यंगेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम इन 5 years from now we will also have probably 1/3 of the global older population in the world, and healthcare is going to play a very, very active part. Please try and do something over there for this particular genre. In case you want to, I can actually connect you to a couple of my startups within this particular space. Thank you sir. Sir, we actually require that thing, visibility plus pilot run के लिए आए क्योंकि वैलिडेट करना पड़ेगा. दोनों चीज़ें देंगे. फिनटेक में चाहिए, हेल्थ केयर में चाहिए, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में चाहिए. These are a couple of startups that are there in my portfolio. Happy to help you get into the Thank data. you sir. As you said, healthcare में कर सकते हैं because जरूरत तो है. Yeah. Yeah, I think interesting, amazing, the kind of solutions you are trying to build. Very futuristic, right? And definitely, as Mr. Anuj said, that it is required not for India, it's required for the world, right? So have you figured out the revenue model? Maybe now, but maybe as you have shown the journey. Yes, sir. You might have heard about AWS key pricing model. So they charge per hour, per API call, or the entire infrastructure. So we are not exactly copying, but taking an inspiration from AWS. So API call पे charge कर सकते हैं. We'll chip तो future की बात है, but currently we have 3 models. So per call पे charge कर सकते हैं, per infrastructure base पे charge कर सकते हैं, per hour पे कर सकते हैं. Depends upon the use case. क्योंकि सर कंपनी को भी थोड़ा सा अपना फायदा देखना पड़ेगा. So we'll be flexible according to what they need. So how much time you will take to start generating revenue? Sir, algorithm ready है, so maybe pilot करने में sir 6 to 8 months मान लेते हैं. So within like next 8-9 months we'll be able to commercialize it. And what kind of customers would be early adopters? Early adopters हो सकते हैं sir आपके, if B2B is possible, defense में कोई connection हो गया तो because sir ये अपना चाइना अटैक किया जा रहा है as usual. सो अगर वहाँ पे अपन लगा सकते हैं तो मैं भी अपने आप पे प्राउड कर सकता हूँ कि कुछ किया मैंने देश के लिए. सो दैट्स व्हाट वी नीड. सेकंड हेल्थ केयर हो गया सर. पेशेंट्स का डेटा, आपका मोबाइल नंबर डालते हैं आपकी पूरी हिस्ट्री आ सकती है. सो इफ़ यू आर एन HNI, अगर आपका डेटा लीक होता है तो उसमें भी आपके खिलाफ पता नहीं क्या क्या प्लान्स बनाए जा सकते हैं. सो yeah, you can try defense actually to start with, because that is, if that is being used, the solution, I think it's a huge use case for that. The use case is very good. The problem is sharing out the data with a private institution. It's not going to be easy straight away coming in from the government. I have various different use cases from the government. There are 2 startups which are working with the government today, and on different technologies. Tying up and getting the government data is a very, very difficult task. So ideally, in case you can work towards healthcare, there's a new requirement just recently got posted over there by the government departments. This was related to healthcare, and I do have 3 startups in the healthcare domain. Happy to help you connect with all 3 of them. So here they are, the absolutely dynamic startup duo. एक चीज़ मैं बोलूँगी आगे बढ़ने से पहले, डेटा को लेके मैं बहुत पैरानॉइड हूँ सर. और जिस तरीके से आपने वो क्वांटम का मीनिंग समझाया, सी आई एम नॉट अ टेकी पर्सन एट ऑल, आई एम अ कम्युनिकेटर. लेकिन वो मेज एंड रैक्स वाला एग्जाम्पल, इफ आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम श्योर एनीबडी कैन अंडरस्टैंड. सो दैट मेड मी रिमेंबर समथिंग दैट आइंस्टीन यूज्ड टू से, अगर आप किसी भी बात को फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे लाके किसी 5 साल के बच्चे को भी समझा सकते हो ना, फंडा क्लियर है. सो आई अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच. एंड मूविंग ऑन टू मिस्टर अनुज बत्रा, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस
particular pitch? Well, I would love to give a lot of good marks over here, but since we have to rate it as per the criteria given to us Yes, by as the per the institution. parameters, yes. So as per the parameters, I'll give them 29. 29. I would love to give them 30, 31, 32, whatever, but still it is work in progress. All right. Yeah. Thanks, sir. So something similar, right? Feedback, right? But yes, because they are still trying to figure out, and you need to figure out the revenue model, because ultimately you need to make whatever you are making, creating sustainable, right? So I've given you 28. 28 from Mr. Rakesh Sudhana. Thank you. Wonderful pitch by both of you, Mr. 𝐒𝐭𝐻 and Yashu-Raj Gupta. Huge round of applause. Thank you so much, and keep going higher. Keep that Anukriti, forward momentum just going. as a guest marks, if I can propose, if Oh, jury is allowed, absolutely. तो मैं 4 marks अपनी तरफ से add on करना चाहूँगा, so that they can reach to the next level and we can listen more about these concepts and all. If you don't mind. Lovely. I was totally intrigued with the data and the quantum work that you were speaking about. Wonderful. Thank you so much. That forward momentum is wonderful. सिर्फ क्वांटम की वजह से नंबर नहीं देने हैं, पैरामीटर्स के बेसिस पे नंबर देने हैं, Correct. है ना? जी, मैं जी। नहीं चाहता हूं कि जो बाकी भी जो स्टार्टअप्स हैं, चाहे उनके आइडियाज छोटे हैं, क्वांटम की तरह नहीं है, बट हर सेगमेंट के अंदर जी। बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, जी। तो उनको भी प्रोत्साहित मिलना चाहिए। बिल्कुल छोटी मिलना चीज भी चाहिए। बना रहे हैं, लेकिन वो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। Absolutely. ठीक है? I Yes. appreciate and accept, sir. बिल्कुल सही बात. Everybody is working very hard in their particular domain as a startup founder. Huge round of applause for this dynamic duo on the stage. Wonderful work. Keep going.